हाय गाइस, वेलकम टू कॉलेज दुनिया स्टडी अब्रॉड। आज हम बात करने वाले हैं अजीज से, जिन्होंने कॉनेस्टोगा कॉलेज से 2 प्रोग्राम्स परस्यू करे हैं। उनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट बिफोर वी मूव अहेड इन आवर वीडियो, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा लिंक है। दिस लिंक वुड हेल्प यू कनेक्ट विद अस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्टडीइंग अब्रॉड, तो आप इस लिंक पे क्लिक करो, अपने बेसिक डिटेल्स भरो एंड हमारे काउंसलर्स आपको 48 से 72 आवर्स में जरूर रीच आउट करेंगे। वी आल्सो हैव 2 वेरी इंटरेस्टिंग ऑफरिंग्स, द वीजा गारंटी पैकेज एंड द ऑफर लेटर गारंटी पैकेज, सो डू चेक देम आउट। नाउ मूविंग अहेड इन आवर वीडियो। Hi Aziz, how's it going, man? It's going great. How about you, Swapnil? I am perfectly fine. Anyways, for the viewers जो कि हमें देख रहे हैं यहाँ पे, अजीज एक छोटा सा इंट्रो दे दो यार अपने बारे में। What are you doing right now in Canada? कहाँ पे पढ़ रहे हो? कौन सा कोर्स कर रहे हो? Just a quick intro about you. Okay, so hi guys, my name is Aziz and I recently graduated from Conestoga College in Canada. It's located in Kitchener, Ontario, which is around 1 hour drive from Toronto. And I completed my public relations program just a couple of months ago, and now I'm working in another province in Alberta. That's nice, yeah. So you are into PR and advertising. Yes. So basically, I did 2 programs. My first program was broadcasting, performance, and digital media, and the second one was public relations. So you mentioned that you've done 2 programs, and both these programs were done from Conestoga only. Yes. अच्छा. So starting from your journey from India से आप कहाँ से? So I am originally from Mumbai, and so my story is a little bit unique one. मैंने अपना engineering किया है, like you know, I completed my engineering, and उसके बाद I did because I really did not like technical stuff. मैंने job किया in the marketing field. So I have worked for a premier institute in Mumbai. Then I worked for a technology company, so in different marketing positions. So as a content writer, as a creator, as a public relations expert. तो उसकी वजह से then I went और मुझे I wanted to do something like you know in the same field, because after a point you need कि आपका करियर कहीं स्टैग्नेट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो then one of my professors suggested me why don't you study abroad, try getting an experience and international exposure. So I tried selecting different countries. So 3 countries were in my mind: Australia, the US and Canada. So specifically Canada मैंने इसलिए चुना because it's affordable or cheaper than other countries, or quality of education be at par. As you mentioned the point of affordability, right? How Yes. What are the difference between the cost of living in Canada and Australia, or let's say Canada or US? US is pretty damn expensive, man. Of course, बहुत सारे लोग उनका first destination होता है to go to the United States, and थोड़ा वीजा मिलने में भी मुश्किल होता है as compared to Canada. And basically Canada तो बहुत welcoming country है for students, for immigrants. So बहुत सारे pros and cons देखने के बाद I finally selected Canada, and I had few friends there, like you know, in Canada. So I had a conversation with them, and they were like, ठीक है भाई, तू आ जा, देख जो भी है देख ले, just apply for some program. What was the first program that you applied for? Conestoga से सबसे पहले क्या करना चाहते? So basically I consulted an agency called IDP. So मैंने IELTS का एग्जाम दे के रखा था, and I just met my agent casually. So she suggested me a few colleges in Canada. उसने मुझे पूछा, मेरा हिस्ट्री पूछा, because I was into engineering, which is like a technical background, और मेरा work experience is in you know, marketing. So it's like a creative thing, which is completely different. Like she was like quite के I don't know, visa rejection के chances हो सकते हैं, because you know you are doing something different
from what you have academic background. बट फिर उसने बोला अगर तुम बहुत अच्छा SOP लिखते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो इट वुड रियली हेल्प यू. और वही मैंने किया. लाइक यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई बिलीव कि आपको अगर एक्सेप्टेंस चाहिए और वीजा रिजेक्शन का. सो वन टिप आई थिंक, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी यूनिवर्सिटी और एनी कंट्री फॉर स्टडीइंग, you have to have a very strong statement of purpose, which is SOP. आपको explain करना है. It's not just आप बहुत सारे agents होते हैं, वो SOP बहुत ही generic बनाते हैं. Like you know, सिर्फ एक generic होता है, बस फिर नाम हटा दिया. और वैसा, I mean, that really does not work. So in my opinion, अगर आपको actually में एक course चाहिए, you have to have very detailed, unique, tailored to your experience SOP. और अगर आप उसको genuinely लिखते हो तो I don't think कि आपको offer नहीं मिलेगा. So about your SOP, तुमने अपना SOP खुद से लिखा था या this मैंने अपना SOP खुद बनाया. So and I made it like a story, like you know, ये पूरा. So when my agent read my SOP, she was like, मुझे लग रहा है कि मैं कोई कहानी पढ़ रही हूँ. And actually it helped, right? You know, because even जो immigration officers होते हैं, जो आपका visa approve करते हैं, they like to you know, read it, like क्यों आपको जाना है. तो मैंने वही बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि I wasn't interested in technical thing and I did marketing. और इसीलिए मैंने वही बोला कि मुझे रिसर्च पे थोड़ा और इंटरनेट एक्सपोजर मिलेगा मार्केटिंग में. यू नो, द नेचर ऑफ द फील्ड इज सच दैट कि आपको जितना एक्सपीरियंस मिले ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, इट वुड हेल्प इन योर करियर. सो एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्यूटिफुली. एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों का रिजेक्शंस भी होता है, बट बिकॉज ऑफ माई SOP आई थिंक मुझे फर्स्ट टाइम में ही मेरा अप्रूव हो गया. सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिडबिट आई कैन गिव यू. But that is so beautiful about storytelling. I mean, as you mentioned, the officers जो आपके visa process करते हैं, right? At the end of the day, you're dealing with a human being, right? Human beings, yes, exactly. Exactly, and humans love stories, yeah. People like to hear stories. People like to curate stories. So yeah, this is a very good point for our viewers, I guess. कि अगर अपना SOP लिखना है, तो you have to be interesting and you have to sound genuine about your reason कि किस लिए आप बाहर जा रहे हो and so on and so forth. And I believe सबके पास story होती ही है, right? You know, whatever it is, you have your own story. So just write it, like you know, किसी की help ले लो, but just be genuine, be authentic. और अगर आप like you know, you can not impress, basically that's not the correct word, but basically अगर आप उनसे कनेक्ट कर पाए, the person who is reading your statement. So I mean, because I've seen so many people, like even with 10 years of gap, like you know, even in their 40s, they have been जो study करने आते हैं. Because I had a roommate back in Ontario, so उन्होंने भी वही बोला कि because मेरा SOP इतना तगड़ा था, इतना strong था, मैंने genuinely लिखा, तो उसकी वजह से नहीं तो वीजा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. लाइक यू नो, इफ दे फाइंड आउट कि आप कहीं ब्लफ कर रहे हो या कुछ भी है, या आप कुछ भी कर रहे हो, तो आई मीन यू नो, योर वीजा गेट्स रिजेक्टेड बिकॉज़ ऑफ कोर्स दे आर ट्रेन्ड. कम नाउ आई हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीजा प्रोसेस. डू यू हैव एनी आइडिया कि किन पॉइंट्स की वजह से वीजा रिजेक्शंस होते हैं? यस, the most important point जो reason आता है, like so many of my friends have been, is like the person will not leave Canada after studies. ये बहुत important point होता है. तो उनको ये convince करना होता है कि आप पढ़ाई करने आ रहे हो और आप ऐसे illegally नहीं रहोगे, basically, right? It's not just another pathway for your permanent residency, right? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. Not just India की बात नहीं करो specific, but basically in countries. I mean, I'm not stereotyping, but in countries, African countries or Colombia वगैरह, वहाँ से they just do things like that, right? So visa rejection उसकी वजह से आता है कि आपका प्रोफाइल थोड़ा डाइसी लग रहा है. Like you know, आप जो भी बोल रहे हो तो authentic नहीं आ रहा है.
तो वो पकड़ लेंगे आपको और आपको रिजेक्शन दे देंगे. And I guess Canada का PR is also very simple, very comparatively very easy to get, I guess. Yes, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे अगर आपका कनाडा में नहीं होगा परमानेंट रेजिडेंसी तो आई डोंट थिंक कोई भी कंट्री में होगा. Yes, यूएस तो भूल ही जाओ, लाइक ठीक है. But I mean, out of all the OECD countries, जैसे English speaking countries, Canada is by far the most easiest and smooth process और transparent है, like you know it's not very opaque like US या जो भी है. आपके points, एक point system होता है, express entry system है, आपको points इकट्ठा करने होते हैं और अगर आप वो cut off में आते हो तो you will get the invitation to apply. So it's pretty simple process. ये points कैसे इकट्ठा होंगे? Let's take your case. क्या तुम अपने लिए points इकट्ठा कर रहे हो express entry system में? Yes, I am trying. So they have like the system is very transparent. जैसे मैंने बताया, it's तो आपको हर चीज के points मिलते हैं, like आपकी English language की skills के लिए, जैसे IELTS में भी आपकी अगर 778 है जैसे, तो उसके आपको higher points मिलेंगे. Like for example, let's say आपके 6 या 5 bands है तो उसके थोड़े कम points मिलेंगे. फिर आपकी French, right? अभी तो like you know if you are very fluent in French you can give the French exam just like IELTS और उसके आपको बहुत ज़्यादा points मिलते हैं, around 50 points like उतने में. फिर आपके siblings है कनाडा में जो permanent resident या citizens है उसके points मिलते हैं. फिर आपकी age उसके points मिलते हैं. So if you are below 30 आपको 110 points मिलते हैं और उसके बाद आपके points कटते जाते हैं. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे experience, right? आपको फॉरेन एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट्स मिलते हैं. उसके बाद कनेडियन एक्सपीरियंस उसके पॉइंट्स मिलते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक यू नो, तो धीरे धीरे करके ये एक्यूमुलेट होते हैं सारे पॉइंट्स और सबको बराबर वेटेज दिया हुआ है यू नो. तो वैसे करते आई मीन इट्स अगर आप उस प्रोसेस में जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है. बट इट्स लाइक यू नो एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरी चीज़ जो एक इमिग्रेंट को चाहिए, जैसे फॉर विच हेल्प्स यू, लाइक यहाँ पे आप आओगे तो आप completely cut off ना हो जाओ लाइक Canadian societies. अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही फॉर एग्जांपल, सो how would you be integrated, right? So जो इमिग्रेशन सिस्टम ये सारी चीजों का ध्यान रखा हुआ है कि so I think that's perfect. That was a very detailed answer about the express entry system, I guess. हमारे व्यूअर्स के लिए एंड जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कनाडा जाने के लिए काफी यूजफुल हो गए. Anyways, let's pivot towards your course and your college now. I wanna get into कि जो course choose करा वो choose क्यों करा and उसके साथ आगे future क्या देख रहे हो and why only Conestoga College? Canada में तो बहुत अच्छे colleges and universities भी हैं. I mean, why did you not go towards University of Toronto, let's say, right? So my first question is gonna be your course. जो कोर्स चूज करा पहले तो वो कौन सा, यू मेंशन कि आपने 2 कोर्सेज करे हैं, राइट? तो पहले कनाडा किस कोर्स के लिए आए थे एंड वही कोर्स क्यों चूज करा एंड देन व्हाई ओनली कॉनेस्टोगा कॉलेज? नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग. नाउ लिसन टू मी. सबसे पहला मेरा कोर्स था पब्लिक रिलेशंस, बट मेरा वो सेकंड कोर्स हुआ बिकॉज मैंने अप्लाई किया इन 2020 व्हिच वाज लाइक द पीक कोविड सीजन, राइट? So I started the process in I guess March 2020 with my agent and और select करने का यही reason था कि I was looking something into marketing and public relations, like communications में basically. So बहुत सारे मैं colleges ढूंढ रहा था कि which are related to my program. So मैंने बहुत सारी कॉलेजेस में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया मैंने, बट यूनिवर्सिटीज आर रियली डैम एक्सपेंसिव, राइट? एंड और उनके 2 to 3 years होते हैं एंड मुझे सिर्फ 1 साल का करना था प्रोग्राम बेसिकली. सो आई मीन आई कैन कंप्लीट इट क्विकली and I can get my post graduation. And then I थोड़ा बहुत मैंने dig किया तो it was like you know the quality of education is pretty same, like but universities of course are better. But अगर आपका कुछ work ex है साथ में and अगर आप colleges के लिए भी जाते हो तो it doesn't really make लेकिन अगर आपका gap नहीं है like you know आपने undergrad किया for example और आपको फिर
continues करना है तो you can select universities, but for people like you have who have some of the work experience, वो I mean they can go for colleges because you know और acceptance rate भी easy होता है in colleges, public colleges as compared to universities, so ये भी एक reason था choose करने का. So ये जो तुम्हारा public relation का जो course था, which was your first choice, but then yes. it became your second course. How did this happen? And I'm तुम्हारा coming first to course that. था क्या? I'm coming to that. मेरा first course ही so I applied for public relations and integrated communications in I think 4 to 5 colleges in and around Toronto region. So मैंने Conestoga में apply किया. I mean it's not like that कि आप एक ही college, आपको पहले the process is पहले आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा कोर्स करना है. I mean it should be very clear about that कि जैसे अभी मार्केटिंग में या फिर कोई आईटी में है तो उसमें भी आपको क्या करना है. यू शुड फिर उसके हिसाब से कोर्सेज आपको देखना है कौन सी कॉलेजेस में कितने कोर्सेज है उससे रिलेटेड. सो मैंने कुछ ऐसे शॉर्टलिस्ट किया अराउंड 10 कोर्सेज अक्रॉस कॉलेजेस इन कनाडा, नॉट इन कनाडा बेसिकली इन ओंटारियो. तो उसके बाद there are colleges in GTA region, which is Greater Toronto region, like Humber College, Fleming College, Conestoga, in and around Toronto. मुझे offer भी आया था from Fleming College and then Conestoga College. Then I chose Conestoga because it was nearer to Toronto and it has a larger Indian population as compared to Fleming College, which is in Peterborough, which is kind of a small town, you can say. तो इसलिए एंड थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया. द कैंपस वाज ब्यूटीफुल एंड द सिटी विच जहाँ पे Conestoga कॉलेज इज किचनर. सो इट्स पार्ट ऑफ Waterloo region. So Waterloo is called the university town. So there are 3 universities और वहाँ पे बहुत ज़्यादा student population है. So I think I thought कि वहाँ पे थोड़ा convenience होगा because it's a university town and you can get things easily, and which happened, right? और वैसे ही हुआ, right? You mentioned one point which was कि Toronto से Conestoga College is nearby, right? Yes, because सबसे पहले तो whenever you go to a place, आप इंडिया से जाते हो आपको familiarity चाहिए होती है, right? Right. और and I come from a city called Mumbai, so बहुत like एक बड़े शहर से आप दूसरे बड़े शहर में जाओगे तो आपको थोड़ा I mean you know you because Canada is pretty scattered, like you know जैसे concentrated populations है. जैसे टोरंटो में अगर आप देखोगे तो it's the उस region के बाहर अगर आप निकलोगे तो you will find nothing for like you know thousands of kilometers. जैसे कि right now I live in the place called Lake Louise. It has just population of 500 people, you know, or most of the Canada is like that. Population centers सिर्फ कहीं concentrated है and more than half of the population of Canada is within 100 miles of the US border. I guess Toronto में because there are a lot of people living there and it's also the hub of all the industries, be it business, finance or anything. I guess it would be easier for you to get a part-time job or a full-time job as well, right? Yes, definitely. And आप कभी भी select करते हो जैसे कि कोई country select करते हो तो आप first of all आप वही सोचते हो कि आप वहाँ पे survive कर पाओगे कि नहीं, आपको job मिलेगा कि नहीं, because that's very important, right? Because you have to work while you are studying. So Right. Toronto, since it's a big city, of course there would be no dearth of jobs, so that was also one of the reasons people select specifically students from India select 2 cities only. एक तो Vancouver और दूसरा है Toronto. And most of the Indian population, like Indian students, select these 2 cities. So Vancouver is on the west coast, like in British Columbia, or Toronto is near the east coast, in Ontario. So before we discuss about the job scenario in detail, I want to understand कि तुम्हारा college, which is the Conestoga College,
and wherever you are living right now, वो living cost क्या है तुम्हारा, tuition cost क्या है? So I have a couple of questions. While you were in college, while you were in Conestoga, आप कहाँ पे रहते थे? आपका accommodation क्या था? I used to live in a shared accommodation, private wala, not the in residence provided by college, because Okay. it was pretty damn expensive. अच्छा, Yeah, कुछ so आइडिया I'll है, come to कुछ that. आइडिया है accommodation Yes. का, like कितने, Yeah. कितना expensive था, क्या costing आती थी? Yeah, so some of my friends used to live in in residence, जैसे कि it's just near college, so it's like $1,000 per month, and I used to pay around $400. When you if were you living in a shared shared accommodation, yeah. like a private place. So it's just like more than a double, right? And Yeah, yeah. कोई फर्क नहीं पड़ता है. I mean, eventually तो कोई फर्क. I mean, you just have the same facilities, right? You may, or most of the people, like most of the students live like that. Just a few, like just जिनको कुछ, I mean, they don't really have any knowledge about it. So उनको ऐसा है कि so we go to that, थोड़ा safety रहेगा या जो भी होता है, that kind of mentality, parents की basically, not students. So मैंने ये भी देखा है कि students starting में रहते हैं like 1 महीना 2 महीना, when they, but फिर जब like they figure it out कि like it's just expensive, just like so they start finding their own accommodation, and हुआ भी है this time. I mean, I see a lot of my friends doing that. So मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला था पब्लिक रिलेशंस in September 2020, but I did not get my visa approval by then because COVID था and the files were really pending for approval. So, और the college की condition ये था कि you cannot even start online if you're not in Canada, ठीक है? So they gave me 2 options, either to defer to another intake, which is January, or select another course, another program. So और मेरा वीजा भी नहीं आया था, तो I then deferred to January. January में भी again the same situation happened, okay? Same situation. मेरा तभी तक PPR आ चुका था, December 31st 2020 को. I still remember मेरा New Year's Eve. I remember मैंने mail खोला and I just went to my mom that I have got my PPR. Right. So उसके बाद they still told me कि you cannot do the course because the course has been suspended because we do not have too much students at this point. So you have to go for another intake. और वो intake था September 2021, and I told them कि I mean, मेरा तो अभी PPR आ चुका है. I mean, I have to start in January anyhow. So they told me you can either take another program if you want to wish. So then I took broadcasting, performance, and digital media, and that was again a very cool program. So I enrolled, and I started, by the way, from India. Okay, online ही start किया मैंने. The entire month of January, I had classes via Zoom from India, and then I flew in February. Quarantine हुआ. I mean, that time there was mandatory quarantine for 15 days. I quarantined. उसके बाद I went to Kitchener, और वहाँ पे भी it was just online. So So you were not visiting your college up until when? कब तक तुम अपने college नहीं जा पाए? Trust me, just imagine कब किया होगा मैंने. January में, this January. So that January. was my first entire program. The broadcasting performance one was completely online in Canada. Oh. Okay, and the public relations one first semester was online, and only in the second semester, जो last semester था, we visited like in the ending stages when the program was just on the verge of completion. That was very, I guess, a bit unfortunate for you. But was it like doing a course online? Was it fruitful for you, or did you have some disappointment in any sense? To answer your question, I think it's subjective, right? For me, it was like I still used to meet my friends, जैसे कि जो मेरा projects थे वगैरह. So it had a lot of
hands-on things involved, जैसे group projects होते थे, you have to shoot videos and edit them. So I used to meet my classmates, but we were not on campus, but हम बाहर ऐसे मिलते थे, तो that was not a problem for me, and it was also easier for us. जैसे commute का time बचता, अगर आप नेगेटिव साइड्स देखते हो तो पॉजिटिव साइड ये भी है कि आप जस्ट यू कैन, अगर 9 बजे क्लासेस है, यू कैन जस्ट वेक अप एट 8:45 लाइक इन योर पैजामास एंड यू कैन जस्ट अटेंड द क्लासेस, राइट? सो दैट वाज वन थिंग व्हिच आई मीन ट्रांजिशन के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे जब व्हेन वी वेंट ऑफलाइन, because then you have to wake up at 7 and get ready and do stuff and things like that. Right. But then uska bhi apna khud hi experience tha, there is nothing like meeting people, seeing people in flesh and blood, right? Just talking to them face to face, it's just completely different experience. So right. dono ka, I mean, dono ka I think pros and cons hai, and I think I personally enjoyed the on campus thing because of course you meet people, you see their faces, like you see their real people, like real in flesh and blood. So yeah. So Conestoga College में and तुम्हारे कोर्स में क्या इंडियंस, बहुत ज्यादा इंडियंस थे तुम्हारे साथ या? Yes. So now जो सिटी में मैं रहता था, it's turning out to be like an Indian city, but नहीं, I'm just kidding. But like you have a lot of students like in Kitchener. So अब कहीं भी अगर आप if you see any Indian student, young person in Kitchener, it's like 100% the chances are they would be studying in Conestoga College. So you meet on bus stops, yeah, railway stations, yeah, malls. May you just have a conversation with anybody who looks like an Indian. And chances are they are studying in any of the campuses in Conestoga College. And by the way, Conestoga had 4 campuses across the cities. It has campuses in Kitchener, Waterloo, Guelph. These are just regions like around the so it has main campus in Kitchener, और उसके बाद आसपास के थोड़े बहुत campuses है. So people are scattered all over the city. You gave us an idea कि आप जो shared accommodation में रह रहे थे, वहाँ पे you were paying around $400 Canadian, I guess, yeah. for a month, right? उसके अलावा आपके living cost में और क्या-क्या चीजें add हो सकती थी? And what was the overall monthly expense जो कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ survival के लिए spend कर? तो एक बात मैं बता दूं कि for Indian students, I think we have to submit GIC, which is called Guaranteed Income Certificate for the first year. अगर आप student हो, Indian student हो, या for selected countries, I guess Vietnam, Pakistan, India and Nigeria, I guess. So इन students को आपको कॉलेज की फीस के साथ साथ आपको एक बैंक में, कनेडियन बैंक में आपको GIC लॉक करनी पड़ती है. दैट इज $10,000, ओके, व्हिच विल हेल्प यू फॉर योर सर्वाइवल, ओके, स्टूडेंट को फॉर द फर्स्ट ईयर. तो और वो बैंक आपको एवरी मंथ अराउंड $700 to $1,000 रिलीज करती जाएगी एवरी मंथ, डिपेंडिंग ऑन द बैंक. लाइक सम बैंक्स डू 700 per month, another banks do 1,000 every 40 days, so which will help you to survive your expenses. So GIC was really helpful for students, just busy for students who come from this region, from subcontinental region. I'm now talking about my expenses apart from the rent, which is the major chunk of your living expenditure. उसके बाद फोन बिल, जैसे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लेना पड़ता है यहाँ पे फोन. जैसे ऐसे प्रीपेड तो होता है, जैसे प्रीपेड कार्ड इतने कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे बिलिंग लेना पड़ता है. तो इट्स अराउंड $50 to $60 उसका चार्ज होता है. उसके बाद देन ग्रोसरीज, इट डिपेंड्स ऑन यू ऑफ कोर्स, बट अगर एवरेज देखा जाए तो $100 to
$150 की ग्रोसरीज आती है. एंड देन अगेन अगर आप बहुत ही ज़्यादा लाइक चीज़ों में जैसे कि यू स्पेंड अ लॉट ऑन ऑर्डर करते हो या सो Right. आप जस्ट inflate it up to like $200 to $250. So 400 plus 50 plus 200. So it's around $600 to $700 आपका एवरेज खर्चा है. देन अगेन आपको अगर ट्रांजिट पास चाहिए होता है तो इट्स अराउंड $90 to $100. So it's around $700. So $700, $600 to $700, I think you can pretty much manage very well. I mean, So agar if you do not have any like hobbies which require a lot of money. right. So इसमें what about the other utilities? मतलब electricity bill आपका, and I don't know if you have a car or not, but कार अगर ली होती उसका खर्चा कितना आ जाता है. And apart from this, I guess you must also be going out for parties, out with friends and so on and so forth. तो वो सारा कॉस्ट अगर जोड़े तो एक महीने में तुम्हारा लिविंग एक्सपेंस कितना बैठता था? मैंने वही बताया, मैंने वो थोड़ा वेरिएबल ही रखा हुआ है कि आई मीन 150 to 250 तक. सो आई थिंक मैक्स टू मैक्स आई थिंक 800 के ऊपर फॉर एन एवरेज इंडियन स्टूडेंट आई डोंट थिंक जाना चाहिए. आई मीन अगर आप बहुत ही फ्रूगल रहते हो तो आई थिंक 500 to 600 में भी यू कैन सर्वाइव प्रीटी वेल. अब इट डिपेंड्स. और जिसने आपने यूटिलिटीज की बात की, इट डिपेंड्स ऑन द हाउस यू आर लिविंग. सो कुछ हाउसेस में इट इज इंक्लूडेड. जैसे रेंट हो गया, हाइड्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो हो गया, लॉन्ड्री हो गया, then what else, वाईफाई हो गया. ये सब बेसिकली यूटिलिटीज आर इंक्लूडेड. एंड आई डोंट थिंक वो मैक्स टू मैक्स $100 से ज़्यादा जाएगा फॉर एनी इवन इन द पॉशेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट्स यू लिव इन. So I think I mean 700 to 800 is a pretty decent amount for a student to live in. So what kind of person are you? Like, are you the frugal one or are you the one जिसके जेब में पैसे बचते नहीं हैं, खूब मजे से खर्चे करता है? So in the start, I mean everyone is frugal. Like जब आप जाते हो, जैसे ये बात हमेशा है, I'll just make it very clear. आप इंडिया से जब जाते हो तो आप हर चीज काउंट करते हो. लाइक आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो. फॉर एग्जांपल आप $2 की कॉफी पीते हो, लाइक 120 रुपए की चाय, एक क्या 5 रुपए की चाय मिलती है, right? That's the mindset. I mean, and it happens with everyone. That's just the part of the process, so starting में जब tak you don't earn money, if you start earning in dollars, then you don't really think about it. Like now, I mean, I don't really convert, but in the start when you are new, you don't know things, और आप हर चीज कन्वर्ट करते हो, और कंपेयर करते हो, राइट? कि मैं इंडिया में होता तो यार ये तो सिर्फ 10 रुपए का मिलता है, आई एम जस्ट पेइंग 500 रुपीज कन्वर्ट करके. सो दिस इज, आई मीन this happens with everyone. And फिर स्टार्टिंग में as I said, as you start earning, आपको जब जॉब मिलता है, धीरे धीरे आप सेटल होते हो. जब आप if you earn in dollars, you spend in dollars, and then you start living a little bit free. So that's how it works. Okay. So as you told me कि monthly आपका expense is somewhere around 700 to 800. Let's keep the number around 800. So 12 महीने के हिसाब से फिर annually it will somewhere cost us around $9,600 Canadian dollars, yes. I guess. So, इसीलिए तो वो GIC का अमाउंट जो है वो 10,000 वैसे ही कैलकुलेटेड करके रखा है गवर्नमेंट ने. It's mandatory for every student कि आप $10,000 so basically जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर आप जैसे दूसरे प्रोग्राम की आपको फीस जमा करनी होती है, राइट? अगर आप अपने घर से नहीं मंगवाते हो वापस फॉर नेक्स्ट ईयर. So what many students do is they use their GIC for paying their fees of next semester, after the year gets over. So आप जो भी आप जॉब करते हो
तो आप उसी से आप सर्वाइव करते हो wherever you work. तो आपकी GIC आपके अकाउंट में पड़ी ही रहती है, which basically what I did, you know. So जैसे when my course got completed, so I paid my fees with my GIC, which was untouched because I didn't really use it because I knew कि मुझे I need money for my next program. And so that was my very pretty clear goal. I'll just save this, I'll keep it, और जितना भी I'm earning, I'll spend it here. And I think ऐसे manage हो गया, and most of the people do like that. Okay. अच्छा, okay, perfect. So about your college now and about the fees, my first question is, did you take any loans to pay off your fees? कोई loans लिए हैं या किसी scholarship पे apply करा? So one interesting thing to note here is that because I used to work before, so I had my savings, and just I worked for around like 3 to 4 years. So uski wajah se I did not fortunately take any loans, but most of the students I know, they take education loans और मिल जाती है, like you know, जैसे वो भी एक process है. I mean that's a completely different conversation altogether. If you have an offer letter, you can apply. You have वो fees का statement भी आता है, so you can apply for the loans from institutions and financial जो देते हैं. You can, and probably, I mean, you know, if you can show them that you are a student of merit, loans में कोई, because most of the students यही रास्ता pursue करते हैं. So now talking about your course and course का expense, आपके course का annual fees क्या था? So my course for my first program was so yeah, अब terminology भी, course यहाँ पे कैसे होता है, subjects को यहाँ पे course बोलते हैं और course को program बोलते हैं. So you know what I mean? Right. जैसे, okay, interesting. Yeah. So program is entire course. जैसे course की बात करें, जैसे broadcasting performance is an entire program. और उसके जो subjects हैं, जैसे कि social media, these are courses, you know, और हर course के एक अलग-अलग professors हैं. So the fees for my first program, broadcasting performance, was I guess around $18,000. Right now it is I guess $20,000. I mean, and it increases every year. And then your PR वाला course जो था, उसका fees कितना? PR was around I guess the same price. The cost was around $18,000. Yes. Okay. So now adding up. Or I mean, ये वही होता है. I mean, you know, it depends on college to college as well, and course to course भी, but ये range यही रहती है. Like you know, अगर आप public colleges में देखते हो, तो it's around $16,000 to $25,000 for any program that you choose. अगर आप universities में जाते हो, तो I think it just shoots up to like $40,000, more than like upswings from $40,000, $50,000. So that was also one of the reasons that I chose public colleges. Achha. So of course colleges ka comparatively fees is very less when you compare it to universities, but let's say अगर किसी के पास $20,000 Canadian dollars भी काफी बड़ा amount है, right? So क्या बड़ा amount है. scholarships के बारे में कुछ पता है क्या? किसी student को कुछ scholarship से help मिल सकती है ऐसे Canada में? Do you have any idea? Yeah. So जैसे कि यहाँ every college conducts sponsorship programs. So it is specific to a program and specific to the field, and which would be only helpful to contact your alumni of the program. जैसे कि Conestoga के जितना मुझे पता है, Conestoga में different schools है, जैसे schools of business, school of creative industry, schools of technology. तो उनके alumni से sponsored होता है. जैसे कि कोई भी किसी के भी नाम पे, जैसे कि हमारे broadcasting performance में the alumni, उन्होंने अपने नाम पे एक I don't remember the name, but एक
स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज की है जैसे फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स. सो अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में चाहिए तो जस्ट विजिट योर कॉलेज प्रोग्राम और एलुमनाई को कॉन्टैक्ट देम. और हर कॉलेज का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और एंडाउमेंट्स होती है और बहुत सारी बर्सरीज होती है एंड बहुत सारी चीजें होती है. सो इट्स स्पेसिफिक टू प्रोग्राम एंड स्पेसिफिक टू कॉलेज. Okay. So I guess for our audience, if you have any queries related to scholarships and you want details about it, so जैसा कि अभी अजीज ने बताया, you can check these things out, or simply you can tap on the first link in the description below. That is one link जहाँ पे आप हमसे कॉलेज दुनिया स्टडी अब्रॉड से contact कर सकते. So all right. Now Aziz adding up the amount जो आपने मुझे बताया, which is the cost of living and the cost of tuition. आपका cost of living for a year was around 10,000 Canadian dollars, right? And the cost of tuition was $20,000. 20,000 Canadian dollars. 30,000 Canadian dollars आप annually spend करोगे ही करोगे मरी से मरी हालत में कनाडा जा, right? Definitely. So I guess अगर Indian currency में ये पूरे amount को हम change around करें 10 to 15 lakhs, right? अच्छा, okay. And I guess this cost can also go up and go about. The cost will 20, only go 80. up. The cost will only go up, you know. Right. Because फिर flights है, बहुत सारी चीजें हैं, like flight है और फिर वीजा का प्रोसेस है, और वीजा का प्रोसेस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, यू हैव टू जस्ट कीप पेइंग फॉर डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो फिर आपकी शॉपिंग है, बहुत सारी चीजें. सो इट इज जस्ट द बेयर मिनिमम. उसके बाद आई मीन यू नो मिसलेनियस तो बढ़ते ही जाएगा. सो Right. I don't know. So just to be on the safer end, I guess for our audience, 20 लाख का एनुअल खर्चा आपको कनाडा में करना ही करना. Yes, for the first Whatever, yes. Whatever course you are, whichever college you are studying in, 20 लाख का खर्चा तो आपका पक्का है. करना ही पड़ेगा. And we did not take into account GIC, that is mandatory, right? $10,000 आपको देना पड़ता है apart from fees, right? That is mandatory for Indian students. So 10,000 plus, और आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरनी होती है. So 18,000 आपको एक साथ में ही देना होता है. So it's like 9,000. So 9,000 plus 10,000, so around 20,000 just for the start, for the first year. उसके बाद once you land in Canada, you can figure things out by yourself. Right. Now talking about the figuring wala part, which is the placement and the job scenario, right? The part-time jobs, the full-time jobs. Firstly, my first question would be, Conestoga placements offer करता है क्या? And if करता है तो क्या तुम्हारी कोई placement की expectation थी? So again, हर चीज का एक ही आंसर ये है कि it depends on program to program, okay? So how good the faculty is or how good the connections are. But Conestoga का बहुत बड़ा alumni network है, बहुत बड़ा career portal है, you know, which is entire system in itself. So जैसे for my specific program, अगर आपको कुछ job openings देखनी है या कुछ भी करना है, you just have to go to their career portal, or you just don't have to apply on a generic sites like Indeed, यहाँ पे बहुत चलता है. उसके बाद Workaholic और ये सब, I mean these are generic sites, but college specific sites भी होती है, job portals which are sponsored by colleges. So you definitely have a higher chance of getting hired on them. और job fairs होते हैं, right? College also conducts job fairs, like 2-3 महीने में conduct करते हैं. तो बहुत सारी companies आती है. You can, I know some people, some of my friends who have got jobs through job fairs. और you know, like मैं अभी बात करूँ आपके field job की, like, but as a student part time बहुत सारे jobs करते हैं, like you know, even I worked in like you know factories, restaurants in this. You can find it through reference. The most
which I can tell the viewers is that references are a very big thing. अगर आपको मुझे जितने भी जॉब्स मिले हैं बेसिकली वो रेफरेंसेस के थ्रू ही मिले, लाइक यू नो, बिकॉज यहाँ पे लाइक पीपल ट्रस्ट पीपल, यू नो, और एंड पॉपुलेशन जितनी कम होने की वजह से आई मीन यू नो अ वर्ड ऑफ माउथ रियली गोज अ very long way. So जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड कहीं जॉब कर रहा था, for example I worked at McDonald's during my education stint, so it was also referred by a roommate, or so वैसे ही है, like you know, so just meet people, make friends. ऐसा नहीं है कि आप आए हो like you know Canada so you can just be isolated, it won't really help. You just try to make a network, and ऐसे जैसे बोलते हैं your network is your network. So Canada में तो it really rings true. Perfect. So I guess In what any I've country. what I've taken from this particular conversation is कि अगर आपको part time jobs या full time jobs चाहिए, so it is very important for you to have a good network, which obviously you can eventually monetize or you can leverage from it. Right. Yes. All right. Perfect. So I guess now, because Yes. Aziz ka internet quality due to his landlord has gone very down, I won't stretch this conversation along, and it's also very late night for Aziz back in Canada. It's past midnight, obviously, and Yes. yeah, I guess it's time to bid our farewell with Aziz. But below in the description box हम Aziz का LinkedIn mention कर देंगे, so that if any of our viewers are having any more questions or queries, or they want to evolve their network, तो वो Aziz के साथ कभी भी connect कर सकते हैं, right? I hope you have a good life in Canada. Any parting notes, Aziz, for our viewers and the audience? Yes, I would like to say that I wish you all the best, and अब ये सारी चीजें तो हो जाएगी, I mean, these are all the processes, but the main thing is आप courage रखो and determination रखो कि जाना है. I mean, obstacles will be on the way. I mean, you know, I wasn't supposed to be in Canada because बहुत like obstacles है. I mean, in 2020 was a complete mess, but I stood through it, and I'm here in Canada finally. So यही मेरा होगा. Or once you land in Canada, just keep helping people, and because it's a process, part of the process. जैसे मुझे किसी ने help की थी when I was new, now I'm helping other people, and it just the chain builds on, right? You know, this is how it works. So that's what I have to tell you guys. Perfect. Lovely note by Aziz, I guess. ठीक है यार Aziz, thank you so much for your time. I hope you have a good day tomorrow. Now you can go and sleep आराम से, and thank you so much for doing this. Thank you so much, Swapnil. Take care, Aziz. You as well. Bye-bye.